Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Flake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Harveer. Thank you, Rajesh. सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पे, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश। Benchmark indices show solid gains today. Sensex settles at 73,651 and Nifty crosses 22,300 mark. आर्थिक सुर्खियों में President Draupadi Murmu asserts that green constructions and innovative engineering is the need of the hour. And oil prices show stability after decline in 2 consecutive sessions, traded at $87.17. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में मजबूत बढ़त, सेंसेक्स 73,651 और निफ्टी 22,300 के ऊपर दर्ज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ढांचागत निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकूल और नवीनतम तकनीक पर आधारित बनाने पर जोर दिया। और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें 2 दिन की गिरावट के बाद सुधार से $87.17 के आसपास दर्ज हुई। चालू वित्त वर्ष के अंतिम कारोबारी सत्र में आज घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% की बढ़त से 655 अंक उछलकर 73,651 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.9% की मजबूती से 203 अंक बढ़कर 22,327 के स्तर पर रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की मजबूती दर्ज हुई। Indian benchmark indices posted solid gains on the last day of the financial year 2024 and extended the winning run on the second consecutive session today. At close, the Sensex was up 655 points or 0.9% at 73,651 and the Nifty climbed 203 points or 0.92% at 22,327. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained marginally by 0.01% and the small-cap index jumped 0.70%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 26 companies appreciated while 4 companies declined. Bajaj Finserv and Bajaj Finance gained more than 3%. SBIN added 2.53%. On the other hand, Axis Bank fell 0.5%, Reliance was down by 0.37% and HCL Tech slumped 0.26%. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged gains. The Power Index jumped 1.69%, the Capital Goods Index rose 1.54%, Realty gained 0.52% and FMCG added 0.64%. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83.40 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स 0.3% की बढ़त से 104.6 के स्तर पर नजर आया। हरवीर, शेयर बाजार में आज काफी अच्छी खबर है, किस तरह से आंकते हैं? इसके पीछे का खास कारण क्या नजर आता है? आज चूंकि इस वित्त वर्ष का अंतिम कारोबारी सत्र भी था, जो अगला सप्ताह है वो कितना अच्छा और कितना उत्साहजनक नजर आता है? देखिए, ये बात तो सही है कि ये सिर्फ जो अंतिम सत्र था आज का, सिर्फ उसका ही नहीं, पूरे साल में मार्केट ने काफी गेन किया और एनएससी तो लगभग जो है 29% का अगर देखें एक साल के अंदर उसमें जंप है। एक्चुअली ये मार्केट का लगातार स्ट्रांग रहने के पीछे जो बड़ी वजह है वो फंडामेंटल्स के साथ लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी है। और
जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्ट किया है। अगर एक सप्ताह में देखें उन्होंने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में। तो एक तो ये होगा कि जैसे हमारा मार्केट में एफआईज और एफपीआई का मूवमेंट मार्केट को काफी ये वोलेटाइल बनाता था कई बार, लेकिन जिस तरह से बेस थोड़ा ब्रॉड हुआ है, हमारे इन्वेस्टर्स बढ़े हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास लिक्विडिटी बेहतर है, उससे मार्केट में एक स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत अच्छे से आया है। तो उसी का फायदा मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट को ओवरऑल मिला है। अब आगे का अगर आप देखेंगे कि एक तो शायद एक्सपायरी आ रही है, दूसरे यूएस का इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, वो कुछ कहीं ना कहीं मार्केट उनको भी देखेगा किस तरीके से आते हैं। सो लेट्स होप के ये जो कंटिन्यूटी है मार्केट को स्ट्रांग मूवमेंट की वो जारी रहे, बट उसके लिए आप सिर्फ उम्मीदें नहीं रख सकते, जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी मार्केट देखता है। So what are those dusra factors that you're talking about? You very rightly mentioned about significant liquidity inflows that we have in the market, and there's a focus on high quality stocks. So going forward, what is your take as to today was 655, tomorrow could be 1,000? But nobody can kind of predict that. Even market went up around 1,100 points. Yeah, to begin with. Yeah. But then settled it here. Yeah. So actually, market definitely there's some predictable thing in the market, but at the same time there are unpredictable things also in the market. So as you mentioned that market is going strong. Our fundamentals are good. The number about the economic growth and other data related to economy are good. We are one of the largest and among the largest economies, fastest growing economy. That is the point. More or less, inflation is also under control. But we also have in our mind that we are going in general election. Around the election time, usually markets sometimes become volatile, or even discount also. Initially, maybe in the past few days, market would have discounted that, but looks like that other market also, globally international market, more or less are going strong. And as recent data is there that one of the most important energy crude prices are softening, so that may give the boost to the market sentiments, because the energy cost will be lower. And that is good for the growth of the economy and for companies' growth. So what's your take on the banking and the financial stocks which led the charge today? You see, in a growing economy, when demand for credit is increasing and investment opportunities are also coming, so it shows. But we also have to see that whether the rates will continue on the higher side, or because it adds the cost of the banks and reduce their net interest margin. So if rates soften in the coming months or so, and let us see that what kind of signal RBI gives. Maybe some consultations are happening in RBI regarding the policy. Yeah, they raise the norms. Yes. Yeah. Yes, so then we have to look all these factors, and it matters. But at the same time, we should also realize that NPAs has gone down. This problem of twin balance sheet now almost resolved. If you see restructuring and IBC norms applied and all those things. So bad assets on the balance sheet of the banks are on the lower side now. So that is a good sign for the banking sector. कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरवीर, हम चर्चा कर रहे थे शेयर बाजार की दिशा के बारे में। आपने कहा बाजार में कुछ जो अच्छे फंडामेंटल्स हैं वो काफी मजबूत हैं, लिक्विडिटी काफी मजबूत है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो नेट परचेजर या नेट बायर की भूमिका निभा रहे हैं। मुद्रास्फीति के फ्रंट पे भी काफी राहत भरी खबरें हैं। क्या इसके साथ एक और चीज भी जोड़ना मुनासिब होगा कि शेयर बाजार की जो दशा है ये हमको ये भी दर्शा रहा है कि चौथी तिमाही में कंपनी जगत भी बेहतर नतीजे देने वाली हैं, जो कुछ ही दिनों में हमारे पास सामने होंगे। क्या ये मानने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं? एक्चुअली देखिए, डेफिनेटली
कई सेक्टर्स में अच्छे नतीजे आएंगे, जैसे कि जो ग्रोथ जहां पर आ रही है, जो ऑटो सेक्टर है, बट देयर आर सम सेक्टर्स के जहां आपको एफएमसीजी वगैरह में उस तरीके के शायद नतीजे ना हो, बिकॉज अभी भी रूरल डिमांड जो है उस तरीके से रिवाइव नहीं हुई है, एंड इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑल्सो। तो बट कई जैसे अभी बैंक्स हम देख रहे हैं, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, और एविएशन सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग गुड। तो डेफिनेटली इन सब सेक्टर से आप बेहतर नतीजों की उम्मीद रख सकते हैं, और उसका मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर का अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं है, ये कितना चिंताजनक या एक चुनौतीपूर्ण संकेत हो सकता है? क्योंकि जो घरेलू उपभोक्ताओं की जो चीजें हैं वो तो निश्चित तौर पे उसमें तो बढ़त होनी ही चाहिए, उसकी खपत तो बढ़नी ही चाहिए, एक मोटे तौर के अनुमान के मुताबिक। Does it reflect the lowering of the purchasing power of the people? एक्चुअली देखिए, अगर आप उसको इस तरह से देखें कि जो इकोनॉमी के हमारे डिफरेंट जो हिस्से हैं उस तरह से हमें देखना पड़ेगा। जो अर्बनाइट्स हैं, जो हमारा शहरी क्षेत्र है, वहां पर मांग बेहतर स्थिति में है, लेकिन जो ग्रामीण डिमांड है वो थोड़ा कम है। उसके पीछे एक वजह ये भी रही कि हमारा जो प्रोडक्शन था पिछला खरीफ वगैरह में, वो प्रोडक्शन उतना बेहतर नहीं था। तो और ये हमें सिर्फ इसी में देखने को नहीं मिला, इवन ट्रैक्टर सेल्स भी नीचे गया है, जो एक इंडिकेटर होता है कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहतर है और वहां लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है तो वहां पर ज्यादा डिमांड निकलती है। तो ये, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि ये जो सेक्टर्स हैं इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उनके उत्पाद है, उनकी खपत का शहरी क्षेत्र में खपत होता है, और वहां पर लोगों के डिस्पोजेबल इनकम बेहतर स्थिति में है बनस्पत के ग्रामीण क्षेत्र के। तो ये चक्र तो चलता रहता है, और हो सकता है कि अभी मान लिया फिर एक अच्छा सीजन आएगा तो फिर रिवाइव हो जाएगा। लेकिन अगर हम रियल्टी क्षेत्र की बात देखें तो वहां पे टियर 2 और टियर 3 सिटीज ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। वहां से जो डिमांड रियल्टी क्षेत्र में आई है, उसके संकेत और इसके संकेत दोनों के आपस में क्या हम कुछ तारतम्य बैठा सकते हैं? देखिए, एक चीज आप मानिएगा कि जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं, जो हम अपने बड़े जो मेगा मेट्रोपोलिस को अगर छोड़ दें, वहां पर ग्रोथ काफी अच्छी है, और इसीलिए हमें ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। दूसरे क्या है कि जो रियलिटी है, रियलिटी का जो एक्सपेंशन है वो इन शहरों में ज्यादा हो रहा है, और वहां पे अगर आप देखेंगे डिमांड बेहतर है, ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन वहां का जो वैल्यूएशन है वो उनके दायरे में है। तो जब आपके सामने जो क्लास 1 सिटी है वहां पर अफोर्डेबिलिटी घटती है, तो बायर फिर टियर 2 टियर 3 सिटी की तरफ जाता है, और मोबिलिटी अच्छी हो गई है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, लोग कनेक्टिविटी भी देखते हैं, और काफी सारा डेवलपमेंट इन शहरों में हो रहा है। तो इसलिए वहां से जो सपोर्ट रियल एस्टेट सेक्टर को मिल रहा है, वो उसकी वजह ये सब चीजें हैं। Harveer, foreign investors purchased Indian shares worth about 2,170 crores today, and domestic institutional investors, as Amit also said, bought shares worth about 1,198 crores. So what will keep them invested? What will keep them interested and in the Indian market? Actually, if you see that in the beginning we talked about that how this index has gone up. If it is giving you 29% jump in 1 year, so anybody can be attracted to that kind of market. And at the same time, we have huge areas for investment opportunities and very diverse. So we have realty, we have banking, we have NBFC, we have aviation, we have infrastructure companies, so we have consumer good companies, we have agrochemical companies and automobile, all kind of basket is available to you. Okay. हरवीर, इन सब सारी चीजों के साथ साथ हम नजर डाल लेते हैं फिलहाल एशियाई बाजारों का कैसा हाल रहा और अमरीकी बाजारों, क्योंकि वहां से भी कुछ अच्छी खबरें नजर आ रही हैं। एशियाई बाजारों में हालांकि आज मिलाजुला रुझान रहा है। हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6% की बढ़त से बंद हुआ। हालांकि जापान के निक्की में 1.5%, सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 0.8% और दक्षिण कोरिया की कोस्पी में 0.3% की गिरावट भी नजर आई।
उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती का दौर रहा। कारोबार के दौरान फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.5% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। US stocks gained today amidst anticipation about the release of final readings of the fourth quarter of US GDP, while weekly jobless claims data will also be in focus. The Dow Jones Industrial Average rose 1.22%, the S&P 500 gained 0.86%, and the Nasdaq Composite was up 0.51%. So, Harvey, the recent US inflation data has sparked concerns about interest rate cuts. So, will they or will they not? Yes, it's a very... actually, the question is being asked many times and everywhere because it gives the direction to the global economy as well as the markets and about liquidity and all kind of things. People takes clue from there. But at the same time, the way US Fed is determined to control the inflation, if US Fed is fully satisfied, only in that case they can take a call to basically to change their stance about the interest rates. क्या भारत में भी इसका सीधा या परोक्ष कोई असर पड़ता हुआ नजर आता है अगर वहां पे ब्याज दरों में कोई बदलाव होता है तो? बिल्कुल पड़ता है और वो सीधा जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है खासतौर से मार्केट्स में उसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है. Moving on, President Draupadi Murmu has emphasized that the infrastructure and construction projects should be made climate-friendly and energy-efficient. Addressing a group of assistant executive engineers of Central Public Works Department at Rashtrapati Bhavan today, the President said that the new and emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning and robots are changing traditional thinking. President Murmu further highlighted that green construction is the need of the hour and innovative methods of construction have the potential to transform this sector. Harvey, the President has very rightly mentioned about green construction, which she has said is the need of the hour, and along with that are the innovative methods of construction, which she would like, the industry to make use of. So, how else? What is it that can potentially transform this sector? See, sustainable development is the key word now, and if we can do anything which is environment friendly, which doesn't affect our environment, so that is good for the society as well as overall this globe, I can say. So the concern President is showing that we should find out new technologies so that these construction activities, as the word green is being used, basically less energy, less destruction, or better basically efficiency or efficacy we need to bring. And for that, technology is the key player now. So it is extremely important now that the government is also focusing quite a bit on the infrastructure side of it, and even in the budget, a lot of money has been allocated to this sector. So, given the importance of this sector and the construction projects, you think that this, you said through green technology, etc., this sector will get transformed? Yes, there is a huge potential. And we should not talk only about this big infrastructure project, but at the same time, any kind of construction activity must be eco-friendly and basically less polluting. Because we see a lot of development around big cities, construction is happening around, and it has direct relation to our health and environment. So any norm must be followed just to protect the environment, and which is good for the health of the common man also. नजर डालते हैं कुछ और खबरों पे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत संशोधित वेतन के बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मजदूरी में 3 से 10% तक की बढ़ोतरी की गई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर में इससे पहले पिछले वर्ष मार्च में संशोधन हुआ था। हरवीर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जब मजदूरी में ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हमने पहले भी बात हम कर रहे थे कि वहां पे जो डिमांड नहीं निकल पा रही थी, क्या ये 3 से 10% तक की मजदूरी दरों को जो संशोधित किया गया है, क्या इससे उनको सीधे तौर पे कुछ बहुत बड़ा लाभ पहुंचते हुए देखते हैं? देखिए, जो मनरेगा है वो रोजगार गारंटी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और देशव्यापी है। और जिन लोगों को काम नहीं मिलता कमर्शियली या दूसरी जगहों पर, उनके पास एक गारंटीड एक इस तरह का विकल्प है कि वो जाएं और वहां पर रोजगार हासिल करें। जो कमजोर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत ही ये अनूठा कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है कि वहां पर उनको एक कॉम्पिटिटिव वेज जरूर मिले और इससे एक इंडिकेशन भी होता है, कि इंडिकेटर की तरह भी होता है कि मनरेगा में जो मजदूरी मिल रही है, बाकी जो काम है उसमें भी कम से कम उसके अनुपात में या उससे अधिक मजदूरी मिलेगी। तो उनकी आर्थिक बेहतरी के लिए मनरेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें 3 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो मानकों के हिसाब से मजदूरी दर तय की गई है। कुछ राज्यों में काफी बेहतर है और 300 रुपए से ज्यादा भी है कुछ राज्यों में। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हरियाणा में है, फिर उसके बाद गोवा में है। तो इसलिए ये मनरेगा में मजदूरी में बढ़ोतरी करना समयबद्ध तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और ये एक पिछले साल के बाद इस बार फिर, क्योंकि 1 साल के अंतराल के बाद उसमें बढ़ोतरी होती है, तो मेरे ख्याल से समय से उठाया गया कदम है, क्योंकि 1 अप्रैल से लागू होगा नए फाइनेंशियल ईयर में। तो श्रमिकों के लिए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी इसको कहीं न कहीं जाहिर सी बात है, क्योंकि मनरेगा के माध्यम से बड़े तादाद में रुपया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाता है। जो उसके प्रावधान है, कभी 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, इवन एक टाइम पर तो जब ये कोविड के टाइम पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा भी पैसा जो फंड्स का फ्लो रूरल इकोनॉमी में हुआ। तो ये जो फ्लो होता है इकोनॉमी में, उसका एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट भी है कि उससे मांग निकलती है और ये सारा पैसा जो जिन लोगों के पास में जाता है वो पूरा का पूरा उसको खर्च करते हैं। तो ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा एक स्थिति उससे बनती है। So Rabi production is going on at the moment. So will this also affect the rates that are going to wage rates that are going to be implemented in the production in the Rabi production as well? Rice Rabi crop harvesting season already started. And this is the peak season now. We are almost in the peak because the harvest of pulses, chana, mustard are taking place. Now wheat harvest is also picking up. So in these that wage rates will also be applicable? Definitely there is a correlation between the two. If better wages are available in Manrega, and a farmer or any other person who is doing any agricultural activity want to employ a person, so he has to give more money to the laborer. So there is a direct correlation between the two. And I think particularly in central, northwest and north India and even east, this is the peak season for manual activities due to the largest harvest activities happening around, and transportation and packaging and harvest and grading. Many activities parallel are going on, and even the sowing of some crops are also takes place simultaneously. It will go on. Yes. Very, very briefly, what about the Rabi procurement? How is it going? Very briefly. What is your anticipation? It has just started. Basically, due to early crop, Madhya Pradesh starts early. But now major procurements and other states like Haryana, Punjab, UP, Rajasthan, it is going to start from April 1st. Okay. Moving on, the oil prices firmed today following 2 consecutive sessions of decline as investors saw a tighter supply outlook ahead, while the OPEC Plus producer alliance is widely expected to stay the course on its current production cuts.
The Brent crude oil futures was up by 1.25% and traded at $87.17, whereas the West Texas Intermediate gained 1.32% and traded at $82.42 when reports last came in. In the beginning only you mentioned that the oil prices are firming up and that's a good sign for the economy. Not softening up. Softening, sorry. And it is only due to that there is a huge inventory there in US. नफा डाले ने सराफा बाजार पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 548 रुपए की बढ़त से 66,915 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 48 रुपए की मजबूती से 74,710 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना बढ़त से $2,231.20 प्रति औंस के स्तर पर रहा। हालांकि चांदी गिरावट से $24.67 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। सोने और चांदी ने जितनी छलांग लगाई है, कहीं न कहीं शेयर बाजार के चाल से कदम ताल करता हुआ नजर आता है। अभी कितनी चमक बाकी है सोने और चांदी में? देखिए, सोना तो काफी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और काफी ज्यादा उसने रिटर्न दिया है, बट सोने की चाल सिर्फ हमारे मार्केट्स और उस पर डिपेंड नहीं होती। सोने के पीछे बहुत कुछ जो ग्लोबल मार्केट्स है और जो ग्लोबल सप्लाई है गोल्ड की और उसके लिए जो डिमांड है वो ज्यादा मायने रखती है। वी जस्ट फॉलोज दैट। तो क्या ये मानने का प्रयास कर रहे हैं कि सोने चांदी में अभी भी चमक बहुत बरकरार है, क्योंकि ऐसे बाजार में स्पेकुलेशन है कि ये भी नई ऊंचाई को छू सकता है? मेरे ख्याल से काफी ज्यादा प्राइस राइज हुआ है पिछले कुछ दिनों में जी, जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में जो है, तो हो सकता है कि कहीं स्टेबलाइज हो प्राइस। चलिए, हर भी कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Benchmark indices show solid gains today. Sensex settles at 73,651. Nifty crosses 22,300 level. President Draupadi Murmu asserts that green constructions and innovative engineering is the need of the hour. And oil prices show stability after a decline in 2 consecutive sessions, traded at $87.17. That's all we have in this edition of Market Mantra. We'll be back with you tomorrow, same time, same frequency. Till then, take care. Goodbye. Market Mantra.